बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रीमियर सुपर लीग 7th एडिशन का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है डीपीएस और एएमटी की टीमों के दरमियान। तो डीपीएस ने एएमटी ने टॉस जीत के तो डीपीएस को पहले बैटिंग दी है। तो पहले ओवर का खेल जारी है। एएमटी के कैप्टन का जो है आइडिया है कि जी इसको 130 तक डीपीएस को ज़्यादा स्कोर 130 से ज़्यादा नहीं होने देंगे, जबकि डीपीएस के कैप्टन का ख्याल था कि जी इसको हम को 170 प्लस में इसको लेके जाएंगे स्कोर। तो देखते हैं जी, T20 है, कितना स्कोर होता है। स्पिनर लगाया है जी दूसरे एंड से, और राठौर साहब फेस करेंगे पहली बॉल का। और पहली बॉल मीडियम पेसर टाइप से हैं ये, और रन आउट होने का ख़तरा, मगर बचत हो गई। राठौर सर वापस क्रीज में आ गए अपनी। अगली बॉल अच्छी बॉल थी, हल्का सा ड्राइव किया, सीधे फील्डर के हाथ में, कोई स्कोर नहीं। भी थोड़ा मॉइस्चर है, अगर एएमटी की टीम को चाहिए था कि फास्ट बॉलर लगा के रखे, और बड़ी अच्छी कट शॉट खेली है 4 रन के लिए। राठौर साहब का पहला चौका। और फील्ड में कुछ तब्दीली, और बड़ा ही अच्छा ऑन साइड पे खेले हैं और इजीली सिंगल ले लिया उन्होंने। राठौर साहब ने डाइव मारी थी, जिससे उनके कुछ पैड भी लूज़ हुए, कपड़े भी गंदे हुए, तो दोबारा एक्शन में आते हुए वो
अली भट्ट, साद नजम, अरसलान परवेज़, यासिर अली, उज़ैर सलीम, सकलैन हैदर, उसामा नजीफ। और इसी दौरान अंपायर की तरफ से वाइट बॉल का इशारा। अगली बॉल, और अच्छा शॉट खेला सीधा फील्डर के हाथ में, कोई स्कोर नहीं होगा। अगली बॉल, और बड़ी अच्छी ड्राइव मारी और उतनी अच्छी फील्डिंग। कवर पे खड़े हुए फील्डर ने बहुत आला फील्डिंग की। और इस टाइम 2 ओवरों के इख्तिताम पे 14 रन 14 स्कोर हुए हैं। जी, जिस तरह के मैं आपको बता रहा था, AMT की टीम का मैंने बता दिया था आपको। DPS की टीम में मुदस्सर राठौर कैप्टन, मोहम्मद आरिफ विकेट कीपर, मोहम्मद सद्दीक, इम्तियाज़ हुसैन, फ़हद रब्बानी, हबीबुर रहमान, अली, साद खान, आमिर रज़ा, ये इनकी साइड है जी DPS की। तीसरे ओवर का आगाज़। पहली बॉल, और बड़ी अच्छी बॉल थी अंदर आती हुई। अगली बॉल, और शॉर्ट बॉल थी, कट खेली थर्ड मैन की तरफ, 1 रन होगा। और भागते हुए आए, बॉल की और अच्छे तरीके से मैनेज किया बॉल को। अगली बॉल, और अच्छी थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल थी, फिर स्टेयर किया थर्ड मैन की तरफ बैट्समैन ने, 1 रन मिलेगा। अगली बॉल, और फिर शॉर्ट पिच बॉल थी, बहुत ही आला फील्डिंग बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की तरफ से, यकीनी चौका था ये।
बॉलर अगली बॉल के लिए तैयार, और बैट्समैन को कुछ थोड़ा सा हेजिटेशन हुई और बॉलर फिर दोबारा अपने रन अप पे गए हैं। और अच्छी बॉल थी, यॉर्कर बॉल, बड़े अच्छे अंदाज से खेले। और 16 3 ओवरों के इख्तिताम पे 16 स्कोर है विदाउट लॉस। कोई विकेट अभी तक गिरी नहीं, आउट नहीं हुआ प्लेयर। और विकेट जो है वो इस तरह शो कर रही है कि कोई बॉलर को खातिर खा जो है कामयाबी नहीं मिल रही है विकेट से, मासवाए मॉइस्चर के या एक आधी कोई गेंद अच्छी अंदर आई है। अदरवाइज़ ये कोई बैटिंग विकेट ही मुझे लग रही है कि जो इस पे जिस तरह डीपीएस ने कहा था कि हम 170 के करीब हमारी ख्वाहिश है कि स्कोर होगा, तो मुझे लग रहा है 150 प्लस जाएगा स्कोर इस पर। और अंपायरिंग के जो आज फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हसन महमूद हैं और कामरान खलील हैं, दोनों बड़े मंजे हुए अंपायर हैं, पीसीबी के पैनल के अंपायर्स हैं। और अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी, लेग स्टंप से बाहर थी। अगली बॉल, और अच्छा खींचा उन्होंने बॉल को, और फील्डर मौजूद, और 2 रन का इजाफा। अगली बॉल करते हुए बॉलर, अच्छी बॉल थी, दिफाई अंदाज से खेले, कोई रन नहीं होगा। अगली बॉल, और ऑफ स्टंप से बाहर थी, थोड़ी सी बैठी बॉल, मगर बीट हुए बैट्समैन। अच्छी शॉट थी मगर सिंगल ही मिलेगा। बाउंड्री लाइन पे फील्ड करते हुए फील्डर ने आसानी से गेंद को फील्ड किया और वापस थ्रो किया बॉलर की तरफ। नेक्स्ट बॉल, और ऑफ स्टंप से बाहर थी, नियर टू द वाइड थी, मगर क्योंकि बैट्समैन ने अपनी क्रीज छोड़ दी थी इसलिए जो है वो वाइड ना करार दी गई। और ये चौथे ओवर के अख्ताम पे स्कोर है जी 18। यार मैंने आपको लिंक भेजा अपना ना, वो यूट्यूब का बनाया है मैंने चैनल, वो भेजा, उस पर भी चला जाएगा ये कि नहीं? ये 4 रन, मिस फील्डिंग हुई थर्ड मैन के हम फील्डर की जानिब से, और अंपायर का 4 रन का इशारा।
अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी, दफाई अंदाज में सीधा बॉलर की तरफ ने खेला बैट्समैन राठौर ने। और अगली बॉल शॉर्ट पिच थी, हल्का सा टैप किया मगर कोई रन नहीं मिलेगा। अगली बॉल करते हुए बॉलर, और बोल्ड कर दिया। पीछे थी बॉल, राठौर साहब रीड नहीं कर सके बॉल को सही तरह और कट खेलने गए थे और आउट हो गए। इस तरह डीपीएस की पहली विकेट गिरी है। 22 के स्कोर पे पहली विकेट गिरी है और पाँचवें ओवर का खेल जारी है। बैट्समैन नेम नए आने वाले बैट्समैन हैं मोहम्मद सदीक, बड़े ही मंजे हुए प्लेयर हैं और वेटरन के प्लेयर हैं और बड़े अरसा दराज से क्रिकेट खेल रहे हैं और हम इनकी क्रिकेट से एंजॉय करते हैं। अगर ये विकेट पे खड़े रहे, पूरे ओवर खेल गए तो बड़ा एक अच्छा टारगेट डीपीएस देने को तैयार होगा। सदीक साहब विकेट को चेक करते हुए, पहली बॉल का फेस करेंगे सदीक साहब और लेग स्टंप से बाहर थी, पैड पे लगी गेंद। फील्डर्स की जान से अपील। अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी, दिफाई अंदाज में खेले। इसी तरह और ये मेडन ओवर रहा, 5 ओवरों के अख्ताम पे 22 रन।
इम्तियाज़ फेस कर रहे हैं बॉल को, पहली बॉल, और दिफाई अंदाज में खेले, कोई रन नहीं होगा। उज़ैर की दूसरी बॉल, और अच्छी बॉल थी, और एज और कीपर के हाथों में से निकलती 4 रन के लिए। शॉर्ट बॉल थी और इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे, मगर बल्ले का भारी किनारा लेते हुए बॉल। और ये आप रीप्ले देख सकते हैं, रीप्ले में आपको वाज़ह नज़र आएगा कि क्या हुआ इस बॉल के साथ, और 4 रन मिले बैट्समैन को। उज़ैर अगली बॉल कराते हुए, और अच्छी शॉट खेली 4 रन के लिए, कोई फील्डर नहीं है वहाँ पे, पॉइंट की तरफ। उज़ैर जो है ज़्यादा शॉर्ट बॉल्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कामयाबी भी मिल सकती थी, मगर ये जैसे बताया कि विकेट जो है थोड़ा गेंद रुकता ज़रूर है, मगर बैट्समैन को फेवर कर रही है। उज़ैर अगली बॉल कराते हुए, और नहायत शानदार शॉट, एक्स्ट्रा कवर में 4 रन के लिए इम्तियाज़ की तरफ से। क्योंकि ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है, तो इसमें बैट्समैन की कोशिश है कि मैक्सिमम रन्स जो हैं ऐड किए जाएं अपनी टीम के लिए। उज़ैर एक दफ़ा फिर आए बॉल की, और बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, मगर 4 वो नहीं रोक सकेंगे 4 रन के लिए। तो काफ़ी अच्छा ओवर साबित हो रहा है अभी तक डीपीएस के लिए। ज़ैर एक दफ़ा पर छोटे कदमों से रन अप लेते हुए आए बॉल की, और अच्छी बॉल थी, और सिंगल मिलेगा। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवरों के अख्ताम पे स्कोर है 39, एक विकेट के नुकसान पे, जो कि इतना बुरा स्कोर नहीं है। जिस तरह की स्टार्ट में कुछ बॉल जो है रुक रही है विकेट में, मगर राठौर साहब की कीमती विकेट जा चुकी है। डीपीएस को ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। और अब स्क्लैन हैदर आए हैं बॉलिंग कराने के लिए, स्पिनर है, राइट आर्म स्पिनर है। इम्तियाज़ फेस करेंगे।
पहली बॉल शॉर्ट पिच डिलीवरी और पुल कर दिया 4 रन के लिए। स्पिनर जब भी बॉल करते हैं तो इनको चाहिए कि वार्म अप हो के बॉल किया करें, अदरवाइज़ इसी तरह होता है कि पहली बॉल पे ज़ोर लगाते हैं, शॉर्ट पिच हो जाती है, लेंथ में नहीं आती, जिसकी वजह से बैट्समैन को मौका मिल जाता है कि अच्छी शॉट लगाने का। शक्लैन दूसरी बॉल के लिए तैयार, इम्तियाज़ भी तैयार। दूसरी बॉल अच्छी बॉल थी, स्टेयर किया शॉट थर्ड मैन की तरफ और 1 रन हासिल किया। क्लैन ओवर की तीसरी बॉल कराते हुए अच्छी बॉल थी, अंदर की तरफ आई, कोई रन नहीं मिलेगा। क्लैन एक दफ़ा फिर और बड़ी अच्छी बॉल थी, बैट्समैन ने बड़ी मुश्किल से रोका उसको, वरना विकेट्स में जा रही थी बॉल। अगली बॉल शॉर्ट पिच तेज़ बॉल थी और 1 रन हासिल करेंगे सदीक साहब, और 1 रन हासिल कर लिया उन्होंने। क्लैन अगली बॉल कराते हुए, और अच्छी बॉल थी, दफाई अंदाज में खेले, कोई रन नहीं मिलेगा। 7 ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर है 45 और 1 विकेट आउट हुई है डीपीएस की। अभी तक का जो मैच नज़र आ रहा है कुछ इवन चल रहा है, क्योंकि अगर एक एएमटी एक ओवर अच्छा करती है तो दूसरे ओवर में स्कोर दे देती है। इसी तरह डीपीएस की टीम जो है वो कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं उठा सकी है कुछ लूज़ बॉल से, मगर ये है कि इट्स क्रिकेट, देखती हैं कि किधर तक स्कोर जाता है डीपीएस का। और अरसलान आए हैं नए बॉलर, और सदीक साहब फेस करेंगे उनको। तो उज़ैर काफ़ी महंगे साबित हुए थे, जिसकी वजह से कैप्टन ने उनको चेंज कर दिया। और अच्छी बॉल और लेग्स पे थी और बड़ा अच्छा शानदार तरीके से सदीक साहब खेले और 4 रन के लिए। मेरा ख़्याल है कि यंग बॉलर्स को आपको कैप्टन को एतमाद में लेना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। पहला ओवर अगर अच्छा नहीं गुजरा तो रिदम में वार्म अप में वो आ गया था, तो उसको दूसरा ओवर ज़रूर देना चाहिए था। फील्ड खुली हुई है, कैप्टन को चाहिए था कि वो उज़ैर को एक और ओवर ज़रूर देते हैं। अगली बॉल अरसलान की, और सदीक साहब हैं बैट्समैन, सीधी बॉल थी, एक सिंगल लिया उन्होंने इजीली। अरसलान अगली बॉल करते हुए, और अच्छी बॉल थी और इजीली एक सिंगल ले लिया उन्होंने।
इम्तियाज़ ने जी वालेकुम सलाम जी जी थोड़ा घट करो। ठीक ठाक बस बस जी जी बताइए ठीक है अच्छा ठीक है है और एक खिलाड़ी आउट हुआ है डीपीएस का लास्ट बॉल अरसलान की कोई गुड लेंथ से ही रेज हुई थी जिसकी वजह से सदीक साहब को थोड़ा सा खेलने में दुश्वारी पेश आई आज लाहौर का मौसम बड़ा क्लाउडी है और फास्ट बॉलर के लिए आइडियल है मगर विकेट की डिमांड है स्पिनर्स और अगली बॉल कराते हुए बॉलर एक रन हासिल किया इम्तियाज़ ने स्क्लैन अपना ओवर जारी रखते हुए दूसरी बॉल शॉर्ट पिच बॉल थी और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से नॉन स्ट्राइकर एंड पे इम्तियाज़ सिंगल भी लेना चाहता था मगर सदीक ने उसे मना किया ट्रिकलैन एक दफ़ा फिर कोई हाफ वाली बॉल थी और ड्राइव किया सदीक साहब ने और सीधी विकेट्स को लगी जाके नॉन स्ट्राइकर एंड पे स्क्लैन अगली बॉल कराते हुए और अच्छी बॉल थी अंदर की तरफ आती हुई सदीक साहब दिफाई अंदाज में खेले उसको स्क्लैन तैयार हैं अगली बॉल के लिए और स्टेयर किया इजीली स्केयर लेग अंपायर लेग अंपायर की जानिब फील्डर मौजूद था उनके साथ ही फील्डिंग की और कीपर को थ्रो की बॉल इसी दौरान एक रन हासिल किया सदीक साहब ने अगली बॉल से क्लैन की और अंदर आती बॉल को मिड विकेट की जानिब खेले इम्तियाज़ और एक रन हासिल किया मिडल ओवर्स में इसी तरह ही चलता है सिंगल डबल ये करते रहें विकेट बचाते रहें तो 15 ओवर तक जो है इसी तरह खेलें और उसके बाद विकेटें बचा के हिटिंग करें और ये
पुल किया बॉल को, शॉर्ट पिच थी, 1 रन ही मिलेगा सदीक साहब को। 56। और इस तरह 9 ओवरों के इख्तिताम पे स्कोर है 56, एक खिलाड़ी के आउट होने पर। 56 5 6 6 56। अरसलान एक दफ़ा फिर सदीक साहब फेस करेंगे। पहली बॉल और अच्छी बॉल थी, अंदर आती हुई। अरसलान AMT के एक अच्छे बॉलर हैं और थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। लाइन लेंथ अपनी बरकरार रखते हैं, मीडियम पेसर हैं। यही वजह है कि उन्हें विकेट्स भी मिलती हैं। कोई गल नहीं है। अरसलान पहली बॉल दूसरी बॉल करते हुए और फिर अच्छी बॉल थी, अंदर आई और 1 रन हासिल किया बैट्समैनों ने। हैं फाइनल लाना है तो लोड नहीं होता। आ जाओ तुसी भी करो। नहीं माराना राय दो अपनी। महाराणा नहीं खेलते पे नहीं वो तो एक दफ़ा फिर अच्छी बॉल और बड़ा अच्छा पुल शॉट मारी सदीक ने, मगर फील्डर मौजूद। 1 रन का ही इजाफा होगा। इम्तियाज़ ने सॉरी हिट आउट किया था ये। आज वो मैनुअल नहीं मंगवाए वो
और वक्फे के बाद मैच दोबारा स्टार्ट हुआ है। उज़ैर दोबारा आए हैं और ऑप्शन से काफ़ी बार थी वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। अगली बॉल उज़ैर की जानिब से, शॉर्ट पिच थी और आउट होते हुए बचे। मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों बैट्समैनों के दरमियान और आउट हो गए। और वापस नहीं पहुंच सके इम्तियाज़। इम्तियाज़ और सदीक की जो रनिंग बिटवीन द विकेट थी वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही। हालांकि इम्तियाज़ को समझना चाहिए था कि सदीक अच्छा रनर नहीं है बिटवीन द विकेट्स और उसको मद्देनज़र रखते हुए सिलसिले को आगे बढ़ाते, मगर उन्होंने गलती की और ख़मियाज़ा उन्होंने ख़ुद भुगता इसका। और इस तरह दूसरी विकेट का नुकसान हुआ डीपीएस की टीम को। न्यू बैट्समैन अली एहसान। अली अरहम और नए बैट्समैन हैं अली अरहम। और उज़ैर एक दफ़ा फिर तैयार बॉलिंग के लिए। सदीक हैं बैट्समैन और ऑफ स्टंप से बाहर थी, अच्छी बॉल थी, बीट हुए, कोई रन नहीं मिलेगा। उज़ैर एक दफ़ा फिर और एक रन हासिल करेंगे। मिड ऑफ की तरफ खेला, बाउंड्री से फील्डिंग की फील्डर ने और विकेट कीपर की तरफ थ्रो किया। और अब अली अरहम सामना करेंगे पहली बॉल का। उज़ैर हैं सामने, अली अरहम आए, बॉलिंग की और अच्छी बॉल थी, स्टेयर किया उन्होंने थर्ड मैन की तरफ, 2 रन हासिल किए। शॉट थर्ड मैन से फील्डर को काफ़ी मेहनत करना पड़ी और उन्होंने 2 रन बचाए। उज़ैर रन अप लेते हुए, अगली बॉल आई अच्छी और अच्छी बॉल थी, मिड ऑफ की तरफ खेले अली अरहम, 1 रन ही मिलेगा।
अगली बॉल, और अच्छी बॉल थी, विद इन द विकेट बॉलिंग करा रहे हैं वो। और इसी तरह ओवर का 11वें ओवर का इख्तिताम। ग्यारहवें के ओवर के अख्ताम पे स्कोर है 66, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। और पहली बॉल राइट आर्म लेग स्पिनर है ये, और स्टेयर किया और 1 रन हासिल करेंगे। और ये मिस फील्डिंग और 2 रन आसानी से हासिल कर लिए अली अरहम ने। अली को बॉल कराते हुए, और बड़ा अच्छा शॉट खेले हैं, और बहुत ही अच्छा कैच अमार ने पकड़ा बाउंड्री लाइन पे। और इस तरह अली अरहम का मौसन ने पकड़ा है, और अली अरहम की इनिंग्स का ख़ात्मा हुआ। और ये अब आप रीप्ले में देख सकते हैं ये किस तरह आउट हुए। नबील जो कल बात नहीं हुई आपसे अब्दुल बासित के बारे में। हाँ, अच्छा। तो मैंने एक बंदे किसी को कहा तो है, अशरफ अली को कहा था, अजहर अली का उसको मैंने कह दिया था। शाहिद नज़ीर है जो ले रहा था ना। जी वो टेस्ट मैं क्रिकेट उसको, जो है जी मुझे बॉलर पता है, फास्ट मैं आर्म। उसको जानता नहीं हूँ। अच्छा, बासित को मैंने रात को बताया था, कहते वो उनको जानते हैं। मैं कहा मैंने उन्हें जिक्र किया था उनके नाम का। शायद नज़ीर को मैं नहीं जानता। फास्ट बॉलर जो थे ना। हाँ जी, राइट आर्म फास्ट बॉलर, न्यू बैट्समैन मीडियम फास्ट। फरहान अहमद, फरहान लिखाओ। नए बैट्समैन हैं फरहान अहमद आने वाले, 13 नंबर। रकीब हैं? रकीब पेचां दे चलाओ, पेचां च। फरहान बैटिंग करेंगे, ड्राइव किया पहली बॉल पे, कोई रन नहीं मिलेगा। अली अगली बॉल करते हुए, शॉर्ट ऑफ पिच बॉल थी थोड़ी सी, और 1 रन हासिल किया। बाउंड्री से फील्डर ने अच्छी थ्रो की। और अली अगली बॉल करते हुए,
और फिर वही गलती की और फील्डर मोशन और बड़ा अच्छा कैच पकड़ा। और इस तरह सदीक की इनिंग्स का ख़ात्मा हुआ। तो एक बहुत बड़ा लॉस है डीपीएस की टीम के लिए। तो ये चौथी विकेट गिरी है डीपीएस की। और रजा चौथी विकेट के खात्मे के बाद रजा लिखा हुआ अहमद रजा। अहमद रजा हैं नए आने वाले बैट्समैन डीपीएस की तरफ से। अली का पहला ओवर था। बैट्समैन को बेशक सदीक साहब सेट बैट्समैन थे, थोड़ा सा बॉलर को रीड करना चाहिए था हिट आउट करने से पहले। अली अगली बॉल करते हुए और ऑफ स्टंप से बाहर थी, कट करना चाहते थे, 69 मीट हुए। और 12 ओवरों के अख्ताम पे स्कोर है 69। 4 खिलाड़ियों के आउट पे, 5 खिलाड़ियों के आउट पे, चार खिलाड़ियों के आउट पे। ये जो है फरहान फेस और उज़ैर बॉल करते हुए फरहान फेस कर रहे हैं और इजीली इस बॉल पे एक सिंगल हासिल किया। 8 नंबर जवाब कितने जवाब दी तबीयत ही थी वो राती सवेरे फजर में मैसेज आया कि बुखार ते उल्टियाँ। उज़ैर एक दफ़ा फिर बैट्समैन है फरहान और अच्छी बॉल थी। रज़ा अहमद रजा सारे में शूज भी ला के मैं क्या सीधी फाइनल तो पहले नमें शूज पाए ने सारे नहीं लगे फाइनल चलो वो बड़ी देर ही चल रहा सी ना वो फिर बजट प्रूव हो गया। उज़ैर एक दफ़ा अच्छी बॉल और 1 रन के लिए मिड विकेट पे गई गेंद। अब फरहान फेस करेंगे उज़ैर का। 71 और 13 ये दिन आज प्रोफेसर साहब नहीं आए। वो कहते मैं भूल गया ओह कि वो ना आ रहे हैं, मैं के लिए तो मैं पके आए निकल ली नहीं इधर ही हुआ मैं यार जावा। उज़ैर अगली बॉल करते हुए और अच्छी बॉल थी और 1 रन बाय का हासिल किया।
वही ने जो अपने से नहीं है। और उज़ैर एक दफ़ा फिर बॉल करते हुए, और फरहान थे, और बड़ी तेज़ी से एक रन मुकम्मल किया। और उज़ैर एक दफ़ा फिर, और अच्छी यॉर्क बॉल थी, सीधा ड्राइव किया एक रन के लिए। 74 और इस तरह 13 ओवरों के अख्ताम पे स्कोर है जी 74, और 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं डीपीएस के। अली एक दफ़ा फिर, अच्छी बॉल थी, स्टेयर किया एक रन के लिए। और दूसरा रन भी लेना चाहते थे, मगर अच्छी थ्रो की फील्डर ने, सीधी विकेट कीपर के हाथ में आई। फरहान है बैट्समैन, अली हैं बॉलिंग करते हुए, और मिस किया। पुल शॉट मारना चाहते थे। विकेट की डिमांड भी स्पिनर्स की थी, और अली ने भरपूर फ़ायदा उठाया विकेट का। और ये थोड़ी सी शॉर्ट बॉल थी, अच्छी ड्राइव, सीधी फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिला। 14 ओवरों के अख्ताम पे स्कोर है जी 76, 4 खिलाड़ी आउट हुए। सीधी आ जाओ। अरसलान है नए बॉलर, बॉलिंग चेंज हुई है। उज़ैर की जगह अरसलान आए हैं बॉलिंग कराने के लिए।
अच्छे बॉलर हैं ये भी। अली हरम फेस करेंगे अरसलान को। पहली बॉल और अच्छी बॉल थी, मूव हुई और समझ नहीं पाए अली हरम बॉल को। अगली बॉल अरसलान, ओवर पिच बॉल और टैप किया हल्का सा, एक रन के लिए मिड ऑफ के फील्डर के पास आई। वापस बॉलर थ्रो। अली हरम ने एक रन हासिल किया इस पर। फरहान फेस करेंगे अरसलान का। और इस दफ़ा अच्छा खेले और एक रन ही मिलेगा। उसामा की अच्छी फील्डिंग। और अगली बॉल अरसलान करते हुए सिंगल मिलेगा, अच्छी बॉल थी। अरसलान एक दफ़ा फिर और समझ नहीं आई बॉल की और ये थर्ड मैन की तरफ आई और दूसरे रन के लिए वो भागे और आसानी से उन्होंने हासिल कर लिया। फरहान ने 2 रन लिए इस बॉल पे, मगर उनको बॉल की बिल्कुल समझ नहीं आई। अरसलान एक दफ़ा फिर और बड़ी अच्छी बॉल थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। इस तरह अरसलान का बड़ा अच्छा ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 15 ओवरों के इख्तिताम पे 81, 4 खिलाड़ियों के आउट पे। और पहली बॉल
और अच्छी बॉल थी, 1 रन हासिल किया अली अरम ने, अहमद रज़ा ने, सॉरी। फरहान सामना करेंगे अली का, और बड़ी शॉट मारना चाहते थे, बीट हुए। अली बड़ी ही नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, विद इन द विकेट बॉल कर रहे हैं, ब्रेक भी थोड़ा मिल रहा है उनको। और अगली बॉल पिछले कदमों पे आते हुए सीधा खेले 1 रन के लिए। अली अगली बॉल कराते हुए और अच्छा खेले, 2 रन की कॉल है और 2 रन हासिल किए। अच्छी थ्रो फील्डर की जानिब से बॉलर को, मगर उससे पहले अली 2 रन बना चुके थे। अली रज़ा फिर खेलते हुए पीछे गिरती बॉल को अच्छा खेले, 1 रन हासिल किया। फरहान सामना करेंगे अली का। आए बॉल की थोड़ी पीछे बॉल थी, मिड ऑफ की तरफ खेले, 1 रन हासिल करेंगे। 87 और इस तरह 16 ओवरों के अख्ताम पे 87, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जारी है, लग रहा है कि ये जो AMT ने अपना हदफ रखा था कि 130 पे इनको आउट करेंगे, या 20 ओवर्स में 130 रन से ज़्यादा नहीं होने देंगे। AMT अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल ठीक जा रही है, और DPS के बैट्समैन की तरफ से इस दफ़ा 87 जाराना धुआंधार बैटिंग की ज़रूरत है। अब ड्रेसिंग रूम से जो फील्डर भी आया पानी लेके, आई थिंक सो वो भी यही मैसेज दे रहा है बैट्समैन्स को कि जी अब आप हिट आउट करें, 4 ओवर रह गए हैं, 6 खिलाड़ी बकाया हैं पीछे। और अरसलान एक दफ़ा फिर भागते हुए और अच्छी शॉट मारी है गैप में, और 4 रन। और बड़े अरसे के बाद एक बाउंड्री मिली है DPS की टीम को। फरहान ने अच्छा खेला था, और अरसलान एक दफ़ा फिर, फरहान है सामने बैट्समैन, और बड़ा ज़ोरदार शॉट खेला मगर सीधा फील्डर के मिड ऑफ फील्डर के हाथ में, 1 रन हासिल किया फरहान ने। थ्रू आउट देखने में नज़र आया AMT के जो बॉलर्स हैं उन्होंने जो बॉलिंग की है अपनी, वो एज पर फील्ड की है। अगली बॉल, और ये वाइट बॉल करार दी अंपायर ने,
लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी। इसी तरह एक्स्ट्रा और जो है लूज बॉल पे ही स्कोर में इजाफा होगा। अरसलान अगली बॉल कराते हुए, फरहान है बैट्समैन सामने और ऑलमोस्ट यॉर्कर थी, मिस फील्डिंग हुई और 2 रन हासिल करेंगे अली रज़ा। तीसरे की कोशिश थी मगर बॉल विकेट कीपर के हाथ में आ गई थी। माइक बंद करिए। माइक। कि बाउंड्रियाँ ली जाएं और AMT की टीम के बॉलर्स जो हैं बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कराते हुए। अगली बॉल स्लो बॉल थी, 1 रन हासिल किया फरहान ने। वो थोड़ा सा लेंथी हुआ है क्योंकि एक बॉल वाइड भी हुई थी इसमें। अगली बॉल अरसलान भागे आए, यॉर्क बॉल थी और तेज़ी से भाग के 1 रन हासिल किया 98 और 17 ओवरों के इख्तिताम पे 98 स्कोर है DPS का। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और कम से कम आखिरी 3 ओवर्स में 45 रन बनाने होंगे तो एक थोड़ा कुछ फाइटिंग स्कोर बन जाएगा। अली अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की अली ने आज। अली रज़ा फेस करेंगे अली को। अली आए, बॉलिंग की, बैक फुट ड्राइव, बॉलर ने खुद फील्ड की। अगली बॉल अच्छी बॉल थी और 1 रन हासिल किया। शॉर्ट लेग पे बॉल गई थी। बॉल और ज़ोरदार हिट मारी है उन्होंने मगर सीधा फील्डर के हाथ में। मौसम थे फील्डर और 2 रन ले लिए हैं। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट DPS के बैट्समैनों की रही। थोड़ा सा मौसम से फंबल हुआ था बॉल, जिसका पूरा फ़ायदा उठाया DPS के बैट्समैन ने।
अली की अगली बॉल तैयार। फरहान है बैट्समैन और बड़ी अच्छी बॉल, और लगता था निक भी हुई है, और कीपर से थोड़ा सा मिस हुआ बॉल, और इसका फ़ायदा उठाते हुए एक रन लिया बैट्समैनों ने। अली तैयार अगली बॉल के लिए। अली रज़ा है बैट्समैन, और अच्छी कट शॉट के लिए उन्होंने, मगर सिर्फ एक रन ही मिलेगा उनको। बड़ी हिटों की ज़रूरत है अब डीपीएस की टीम को, बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है। अली की अगली बॉल, फुल टॉस बनाया और सीधा खेला 4 रन के लिए। अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया था फरहान ने। डीपीएस के बैट्समैनों को इसी तरह की शॉटों की ज़रूरत है। 18 ओवरों के अख्ताम पे 107 डीपीएस का स्कोर है, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तो अब देखते हैं कि जी अगले 2 ओवर्स में डीपीएस कितना स्कोर कर पाएगी। डीपीएस जो क्वार्टर फाइनल खेली थी उसमें डीपीएस 110 पे आउट हो गई थी, मगर टूर्नामेंट की एक बड़ी मजबूत टीम सीबीएस थी जिसको कि उन्होंने 50 पे आउट कर दिया था, मगर वो डिफरेंट विकेट थी, इस विकेट से मुख्तलिफ थी, वेन्यू भी मुख्तलिफ था। और यासिर फिर वापस आए हैं बॉलिंग के लिए। अली रज़ा जो हैं फेस करेंगे यासिर को। यासिर आए, बॉल की और वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। 1 रन का और इजाफा डीपीएस का। अभी भी पूरे 2 ओवर बकाया हैं। अगली बॉल और फिर फुल टॉस बनाया और 1 रन का इजाफा होगा यासिर की बॉल पे। और ओवर थ्रो और एक बहुत ही गंदी फील्डिंग और बड़ी सुस्त रवि का मुजाहरा किया डीपीएस के फील्डर्स ने, जिसकी पूरा फ़ायदा उठाया डीपीएस की बैट्समैनों ने और एक इजाफी रन हासिल किया। और फिर अली रज़ा फेसिंग पे आ गए हैं और यासिर एक दफ़ा फिर और कदमों का इस्तेमाल और 1 रन और हासिल किया। एज लगी थी बॉल को और लॉन्ग लेग की तरफ बॉल आई फील्डर के पास। फरहान फेस करेंगे अब यासिर का। यासिर आए, बॉल की और लेग स्टम्प से बाहर थी, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। 1 और रन का इजाफा डीपीएस की टीम के स्कोर में। यार एक काम तो करो, बॉर्डर टाउन में मैच होता है ग्रीन, उसकी तो
और एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा और उज़ैर थे फील्डर जिन्होंने पकड़ा। इस तरह डीपीएस की 5 विकेट गिरते हुए फरहान आउट होके पेविलियन में वापस जाते हुए। नया कौन है बैट्समैन? सऊद खान नए आने वाले बैट्समैन हैं सऊद खान। अपना ओवर जारी रखेंगे। ना यहाँ से आए सऊद है बैट्समैन और फुल टॉस और वाइड बॉल का इशारा बहुत बार थी। अगली बॉल यासर और फिर बहुत ऑप्शन से बाहर थी मगर अंपायर ने बेस्ट जज किया और ये वाइड बॉल नहीं करार दिया इसको। और अगली बॉल यासिर की और 4 रन हो गए। एज लगा और फील्डर पीछे हैं और रोक नहीं सके और 4 रन का इजाफा और कीमती 4 रन का डीपीएस की टीम में। जी और अच्छी बॉल पे इख्तिताम किया ओवर का उन्होंने अपने। इस तरह 19 ओवरों के इख्तिताम पे 117 स्कोर है। 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं डीपीएस के। अब आखिरी ओवर रह गया है, देखते हैं कि डीपीएस इसमें कितना टारगेट दे पाती है एएमटी की टीम को। एएमटी की बैटिंग लाइन बड़ी अच्छी है और बड़े अच्छे बैट्समैन हैं इसमें। ये भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा खेले हैं और बड़ी एक जेल होकर टीम खेलती है। अब मगर क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। और मोहसिन आए हैं आखिरी ओवर करने।
मोहसिन आए, बॉल की और एक हाथ से खेले हैं, अवे द बॉडी थी, दूसरे रन के लिए भागे और ये आउट करार दिया। डायरेक्ट थ्रो थी। और इस तरह सऊद रन आउट हो गए हैं, क्योंकि आखिरी ओवर है, इसमें मैक्सिमम उन्होंने रन जो हैं करने हैं डीपीएस के बैट्समैनों ने। तो देखें कहाँ तक कामयाब रहते हैं। मुनीब भट्ट हैं नए बैट्समैन। मोहसिन अपना ओवर जारी करते रखते हुए, अली रज़ा हैं सामने आए और ऑफ स्टंप से बार और वाइट बॉल का इशारा। काफ़ी सोच के जो है डिसीजन दिया कामरान खलील ने। मोहसिन अगली बॉल करते हुए और पीछे थी और सीधी शॉट मारी है। 2 रन की कॉल है अली रज़ा की तरफ से और फील्डर उसको रोक नहीं सके और 4 रन और 4 कीमती रन्स का इजाफा डीपीएस की टीम के स्कोर में। 123 स्कोर हो गया है। और ये देखें किस तरह रीप्ले में चौका हुआ, क्योंकि आखिरी ओवर है, इसमें तो हिट आउट करना ही करना है इन्होंने। अगली बॉल मोहसिन की और लेग स्टंप पे थी और शॉट मारी है उन्होंने और अली रज़ा ने दूसरा रन की कॉल और आसानी से पहुंच गए, मगर अंपायर ने आउट करार दिया। बड़ा ही क्लोज कॉल थी ये, जो कि अंपायर हसन महमूद ने बड़ा वेल जज किया और इस तरह अली रज़ा की इनिंग्स का ख़ात्मा हुआ और डीपीएस की ये 6ठी विकेट गिरी। सात विकेटें, 7वीं विकेट गिरी है। नए आने वाले बैट्समैन रुबानी अनवर। 3 बॉलिंग लास्ट ओवर की 3 बॉल्स बकाया है। 124 स्कोर है। देखें कितना इजाफा करती है डीपीएस 3 बॉलों में। एएमटी ने जो स्टार्ट में उनके कैप्टन ने टॉस के मौके पे इंटरव्यू में कहा था कि जी ये 130 तक हम कोशिश करेंगे कि इनको स्कोर इससे ज़्यादा ना होने दें, वो उसमें कामयाब हो गए हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। मोहसिन अपनी आखिरी 3 बॉल करते हुए, रब्बानी है बैट्समैन और बड़ा ही ज़ोरदार शॉट, फील्डर नीचे हैं और मगर वो पीछे थे थोड़ा और ये 2 रन हासिल किए रब्बानी ने। और आखिरी 2 बॉल रह गई हैं मोहसिन की। रब्बानी है बैट्समैन, बॉल आई की और ज़रा खींच के मारा उन्होंने, 1 रन ही मिलेगा
127 स्कोर हो चुका है अभी तक डीपीएस का, और आखिरी बॉल रह गई है। अब मोशन करेंगे आखिरी बॉल ओवर की, और बड़ी शॉट खेलना चाहते थे मगर एक रन ही हासिल करेंगे। और इस तरह ओवर का 20 ओवर्स के इख्तिताम पे स्कोर हुआ है 128, 7 खिलाड़ियों के आउट पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद कि जी अब किस तरह की बॉलिंग करते हैं डीपीएस के बॉलर्स, सारा उन पर डिपेंड करता है क्योंकि शॉट टोटल है यार। एक मिनट ठहर जाओ ना जरा यार तुम। तो इस तरह ये जो है डीपीएस की इनिंग्स का ख़ात्मा 20 ओवर्स के इख्तिताम पे 128 रन बनाए हैं। और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome all listeners to the Premier Super League 7th edition, and we are welcoming you here at the Arfa Kareem Tower picturesque cricket ground on the occasion of the first semi-final. This tournament has been organized for the last many years by Fahim Mukhtar Bhatt, who is a legend in cricket circles and in corporate cricket, and is very instrumental in building up the nation's health and bringing the teams together, important teams from the corporate and the government sectors, top teams of Pakistan. For many years he has been conducting such great tournaments. I am Professor Salman Rafiq and very happy to be doing the live commentary here for you. Premier Super League 7th edition, the first semi-final between AMT and DPS. And AMT won the toss and decided to bowl first. And batting first, DPS was bundled out for the low target of only 128 runs, giving 129 to win. And now AMT is batting. So we'll be seeing just what they do. I think that they can overhaul this total and make their way through to the final. But cricket is a game of glorious uncertainties. So you just never know. If they bowl as well as AMT did, then they just might pull a surprise and win. That is the beauty of cricket. हाँ मैं पास ही बैठूँ हाँ पास ही बैठूँ ये शानी मेरी थी ना So that has been driven away through mid-off for a single. So the score is 13 in the second over. All wickets intact. And AMT is batting to overhaul this total of 128. Overcast conditions conducive to bowling as the bowler comes in, and that has been hit away towards the cover region but fielded well, no run. So if they make use of these overcast conditions and move the ball in the air, then they can do penetrative bowling and gain wickets. The important thing is to gain wickets. Because if they make inroads into the batting lineup, only then they can win, because the total is a very low one. This T20 cricket tournament is coming to you live in the Premier Super League organized by Fahim Mukhtar Bhatt 7th edition. We are reporting to you live the first semi-final between AMT and DPS. At the conclusion of the second over, the score is 14 without loss.
Mudassar Rabbani. Mudassar Rathore bowling from the Dafi Stadium end. And that was a wide ball, so signalled by the umpire. So they should not be giving these extras away because they already have very low score upon the board. And rapped on the pad and given leg before wicket. That was a ball which did not strike the pitch. Yorker hit him on the lower end of the pad, and he was trapped plumb before the wicket. The umpire had no hesitation in raising the finger, so that ball moved through the air. A good comeback from the bowler. So we are going to show you the action replay here, and the batsman knows that he is trapped. That ball swung in late, wrapped the batsman on the pads. Vociferous appeal for leg before and granted so by the umpire. First wicket goes down. So now this is going to be an interesting match because, as I mentioned earlier, they are starting to make use of the overcast conditions. And with the first wicket down, the score at 15. The first scalp taken, but they will have to bowl out of their skins to get the rest of the 9 wickets, but they can. The conditions are favouring the bowling because overcast conditions, the ball will move in the air both ways. Driven towards mid-off, straight to a fielder. So good field placing. New batsman. One down batsman is Ali Raza, facing the bowler Mudassar Rathore, who comes in now. And that was played away towards extra cover. Again the fielder. So good field placing by the captain of DPS. They are not managing to penetrate the inner field. Bowler name. Bowler focus. Yes, ठीक है. Yes, yes. Batsman ready to face the next delivery as Mudassar has the ball in his hand. Bowling from the Arfa Kareem Tower end. A beautiful and picturesque cricket ground on this winter's day in late November. And that has been hit away towards the onside, and that is crossing the boundary line over the mid-on boundary rope for 4. Good shot. He went on the back foot and drove the ball through the mid-on region, bisecting the fielders there. The ball crossed the boundary line for 4. Good shot.
This was Waqar Buhari who hit that sparkling onside drive, and the bowler comes in again. Yorker length ball, carefully played, no run. So, ladies and gentlemen, at the conclusion of the third over, the score is 20 for the loss of 1 wicket. In the first semi-final of the Premier Super League 7th edition, being played on this beautiful winter's day in late November 2023. This tournament organized by Fahim Mukhtar Butt. I am Professor Salman Rafiq doing the live commentary for you from the ground and live all over Pakistan. This is a very popular tournament and it is competed by the top corporate teams and government sector departments of Pakistan. As the bowler comes in from the Gaddafi Stadium and that has been glanced away. Towards fine leg for a couple of runs. Misfield there, and that cost the bowling side a needless boundary. That should have been stopped considering the low total they have on the board. So a costly misfield costing the bowling side 4 precious runs, which they should have saved. Total, but at the moment fighting mightily back the DPS side. Everybody had given them up because this was a very low total, but now they have got the first 2 wickets. With the score only at 31. So if they manage to take wickets, that's the only way they can win this low scoring T20
match, the semi-final. Fighting for top honours here. That ball played away towards mid-on for a single. 32 the score for the loss of 2 wickets at the conclusion of the 4th over. So the average is fairly good. Eight runs per over. So average is quite healthy, but the problem is they have lost 2 of their openers. Mudassar continuing from the Arfa Cream Tower end. Mohsen is facing up to him. His partner Ali Raza is on 8 and Mohsen has just come in at the fall of the second wicket. Goes on the back foot, punches the ball away towards mid-off for a single. The bowling side should be giving the ball plenty of air so that they give it a chance to move in the air, because with the shine wearing off, then the ball will not be swinging. So these early overs, they should move the ball more, and therefore they should give the ball air and not bowl short pitched. Stopped by the player in the infield, and only a single results. So he stopped a single with a dive, the fielder. They should be diving all over the ground because they have a very low total. As Mudassar turns at the top of his run-up, comes in, bowls, and that has been hit away again towards the same fielder, and he makes a good stop, prevents any run. So the extra cover fielder is doing a good job there. Setting a good example for the rest of the bowling side and the fielders by throwing himself all over the ground and stopping runs. That was short of a length and easily played away towards the onside for another single. He should be trying to bowl Yorkers. He had success with the Yorker in his earlier overs. So it's Mudassar Rathore, the captain, bowling, and that was a good shot, off drive, but only a single. Good field placing by Mudassar Rathore, the captain, because the field is evenly spread out and it is not presenting any gaps to the batsman. Still, the average is a healthy one, provided that they retain the wickets and don't lose any more. They will be in a position to win this first semi-final of the Premier Super League 7th edition. As the bowler comes in once again, bowls. That was a Yorker length delivery, well played, washed all the time. A single towards the onside. So after the conclusion of the 5th over, folks, the score is 37 for the loss of 2 wickets.
AMT batting in response to the DPS target of 129 runs in their allotted 20 overs. A low total, easily overhaulable, but the problem is they've lost their openers. Good ball. Rabbani bowling from the Gaddafi Stadium end, and that was a good delivery. Nothing the batsman could do except defend. Wide signalled by the umpire, and they cross over for a single as well. Sharp break and going outside the leg stump. Umpires very strict on anything down the leg side in this format of the game, the T20 tournament. And they steal a sharp single. The close-in fielder a bit slack. He should have run in quickly to prevent that single.
and that ball has been hit away towards the cover region. So in 6.2 overs, the score is 42 for 2, and they are steadily overhauling this low total without losing any more wickets. So the DPS side should now take more wickets, and that is a costly misfield, and it allows 2 more runs. The ball went right through his hands. 44 the score for the loss of 2 wickets. 7th over in progress. अच्छा पीटीवी पे भी आया, मैं आपको भेजूंगा। AMT and DPS teams, both top corporate teams of Pakistan, in the Premier Super League, which is already so popular a tournament that it is in its 7th edition, organized by Fahim Mukhtar Butt, who has been organizing many such cricket tournaments since the 1990s. I am Professor Salman Rafiq doing the live commentary for you, and I have been associated with Fahim for the last 25 plus years, a quarter of a century, since the 1990s, since the time he organized his first tournament. 747. So after 7 overs, the score is 47 for the loss of 2 wickets. AMT team in pursuit of the 128 runs scored by DPS, who batted first. AMT won the toss and put in the DPS team to bat. They exploited the morning moisture and overnight dew and bundled out the DPS strong batting lineup for only 128 runs. Now DPS fighting back through their captain Mudassir Rathore, and they have managed to get 2 wickets. That was a waiver delivery, something the DPS team could do without. It was so wide outside the leg stump that not even the keeper had a chance of gathering that ball, and it went for 4 byes as well as a wide. So 5 costly runs conceded by the bowler on that waiver delivery. As he comes in now once again, bowls. Wrapped on the pad but going down the leg side. And they steal 2 more runs, leg byes, signalled by the umpire. The umpires officiating are Kamran Khalil and Hassan Mahmood. Kamran standing at square leg and Hassan Mahmood keeping a sharp eye on the proceedings from the bowling end.
Hassan Mahmood, a quite popular umpire in these tournaments. The organizer of this tournament, Fahim Mukhtar Butt, started with Mukhtar Ahmed Butt Memorial Cricket Tournament. Mukhtar Ahmed was the father of Fahim and a professor and sports organizer at the Government College Lahore, which is now GC University. I have also taught for many years as a professor of English literature at Government College Lahore, GC University, and I was also lucky enough to be a student of Fahim's father, Mukhtar Ahmed Butt, Professor Mukhtar, and I was also in his cricket team, but I was also the captain of the swimming team, in which I was national champion of Pakistan in swimming and water polo. And in the winters we played cricket, and Mukhtar Ahmed Butt was our teacher, sports teacher. So Fahim has been carrying on the good work, organizing first tournaments in his father's name, and then the Premier Super League and many such tournaments over the years. It's now almost a quarter of a century, and he is still going strong with this tournament. Today, the 25th of November, on a mild winter's day, we are witnessing the semi-final of the Premier Super League, such a popular tournament that it is already in its 7th edition. So folks, after 8 overs the score is 56 for 2, and this pair has managed to stay at the wicket. If it does so, then they will be able to win this first semi-final quite easily. But if they lose wickets, then it can be anybody's game. That's the beauty of cricket, a game of glorious uncertainties. But now they desperately need a wicket, the DPS side. They have managed to get the first two, but after that this pair has stuck it out. बेटा हमारी भी शॉट ले लेना कमेंट्री कर लो $73 56 73 रह गया 12 में. And that has been glanced away towards the onside, and they take 2 runs. No, a misfield there and a boundary signalled by the umpire. Batsman getting ready to face up. The bowler has the ball in his hand. The DPS bowling side desperately needs wickets to stay in this match, and that won't help. That was a short pitch delivery. So they should be giving the ball plenty of air so that it can move off the wicket and in the air. Short pitch delivery, lucky it wasn't hit away for more runs. As the bowler comes in again, right arm, and wrapped on the pad and given out. Trapped plumb in front. So just when I was mentioning that they should be in the replay, we can see that as I mentioned in the previous ball, that the bowler should be giving the ball more air so that it can do something off the pitch and in the air, and it seems that
he did just what I thought he should do, and the ball wrapped him on the pad, coming sharply in. Trap plumb blank leg before. And the batsman had no hesitation in raising the fatal finger. Third wicket goes down. So the third wicket goes down with the score at 61. 61 for 3 in the 9th over. They still have plenty of wickets and only a few more runs to get. But if they manage to keep on taking wickets, this match may be heading towards an exciting finish. हाँ अच्छे रहे हैं, ये दरख्त है ना। हमारा जब करना बता दें तो मैं 1 मिनट और बात कर सकते हैं। That was hit away towards point for a single. 62 for 3. So one ball remaining in the 9th over. 62 for 3. Good ball. Covers up and plays it back to the bowler. So, ladies and gentlemen, this live commentary is coming to you from the Arfa Karim Tower picturesque cricket ground. The Premier Super League 7th edition being contested between AMT and DPS in the first semi-final. We have come through all the league matches and the quarter-finals, and the two semi-finals today will decide who will vie for the top honours in the final to be played next week right here on this ground. In this important and popular tournament, the Premier Super League, which is in its 7th edition, I am Professor Salman Rafiq and very happy to do the live commentary for you, ladies and gentlemen. Folks, this commentary is going live all over Pakistan and the world in this important tournament conducted under the Pakistan Cricket Board rules with the official umpires and under the rules of the PCB governing the league matches. All the top government sector and corporate teams are here, and AMT won the toss and decided to bowl first, put DPS into bat. They took full advantage of the morning moisture and the overnight dew and managed to bundle out the DPS team for 128. But now the DPS bowling side is fighting back. They have managed to get 3 wickets with the score at 63. The 10th over in progress. At the halfway stage, the 10th over in progress, the score is 63 for the loss of 3 wickets. 10 overs left, 129 to win. So the advantage has to be with the, and that was a very bad ball. A rank full toss and dispatched through the deep cover region, crosses the boundary line for a boundary. 4 more runs. So this sort of bowling should be avoided by the DPS side. That was a waist length full toss and easily dispatched by the batsman for 4. They should try to target the good length spot, the bowler. And that is a dead ball signaled by the umpire. He comes in now once again. Better delivery.
stretches forward in the classic forward defensive stroke, plays it away towards mid-on region for a single. Another good delivery. Stretches forward in the classic forward defensive stroke. Ball goes back to the bowler, who collects off his own bowling and goes to the top of his mark. Comes in now, right arm over the wicket, bowls, and that ball has been played away towards point for a single. So folks, at the conclusion of the 10th over, the score is 69 for 3, and we are at the halfway mark in the AMT batting innings. AMT, as I mentioned earlier, won the toss and decided to bowl first, put DPS in to bat, took full advantage of the morning overcast conditions and moved the ball around, bundled the DPS strong batting side out for 128, 129 the target being set to win. And now DPS fighting back with 3 wickets down. 69 for 3, 11th over starts now. And wide. Bad ball, short and wide. Lucky that it did not go for a 4. They should be bowling stump to stump and targeting the good length spot, because only a few more runs left and they should be bowling better than this. Yes, that's a good delivery, right on the good length. It seems that they are reading the commentator's mind, because in a previous over, couple of overs earlier, I mentioned that they should give the ball air and do bowl a Yorker length, and the bowler immediately adjusted his line and length and got the wicket. So telepathic. But still the advantage has to be with the AMT side. Because they have 7 wickets in hand still. So unless they bowl out of their skins and get these rest of the 7 wickets, AMT is going to carry the day in the first semi-final of the Premier Super League. Vociferous appeal for leg before, but disallowed by the umpire, who is in the best position to judge. I think that was too high, struck him too high, and the ball would have passed over the stumps. As the bowler comes in, beaten outside the off stump. Good ball. And at the conclusion of 11 overs, the score is 73 for 3. 50 odd runs left, not much, and they have to bowl out of their skins now, the DPS side, if they are going to stay in this tournament. They have played well throughout the tournament under their captaincy of Mudassar Rathore, who leads from the front both batting bowling and sets a good field also. But he has so few runs to play with, his bowlers. His batsmen did not give him the adequate runs for his bowling side to make a match of it. Still he is fighting mightily,
And in this game of cricket, this game of glorious uncertainties, this game that we all love so well, you never know, right till the last ball and last over is bowled. So you can maybe have a hat trick in the last over. That has happened at the top level. So I'll be giving you what they require in 9 overs. They need 56 runs, and the average per over comes to 6.2. Gettable, easily gettable, with 7 wickets in hand. And that ball wide outside the off stump. So that's very rare. That was a rank wide ball. A huge wide outside the off stump. Outside the off stump, the umpire is not so severe, but this was so wide that he had to give an off stump wide. Usually the leg stump wide is given by the umpire in T20. They are quite strict with that. But this was really wide. This is not something that the DPS team needs, these extras. More on target, hit away towards point for a single. .75 the score now with that single for the loss of 3 wickets. And they desperately need another wicket, because if this pair remains at the crease, then they are going to overhaul this low total, as the bowler comes in from the Gaddafi Stadium and turns his arm over, right arm over the wicket, bowls, and played away towards deepish point region for 2 runs. So with this couple more, 77 the score for the loss of 3 wickets in the 11th over. Sharp single taken. 78 for 3. So maybe they should put pressure on the batsman, have a short leg and bowl some short pitch deliveries or a slip, because they are going nowhere. The score slowly but steadily being overhauled. Plenty of balls remaining, plenty of wickets. Covers up, plays it away towards mid off, and ball should have been fielded. That went past the fielder for a boundary. So very shoddy fielding for a bowling side that needs to save every run, and that should have been only a single, but went for 4. So fielding slipshod in the ground by the DPS side. They should be throwing themselves all over to stop runs. Instead, they are conceding and leaking runs. And the captain must be biting his nails in frustration and pulling at his hair, because fielding not up to the mark. 86 the score at the conclusion of 12 overs. So after 12 overs, the score is 86 for 3. 8 overs remaining, and
7 wickets in hand. So the advantage has to go with the AMT side, but AMT, if they lose more wickets, we can go for an exciting finish. At the moment though, they are coasting due to some bad fielding and ordinary bowling. So now this over very vital. If they can manage to make inroads and get a wicket in this over, then there might be some chance, because now only a few runs left. Only 43 more runs to get in 8 overs with 7 wickets in hand. So desperate for a wicket, the DPS side, in this first semi-final of the Premier Super League 7th edition. Again, we see that the ball went straight to the fielder, and he let the ball slip through his hands and feet for a 4. That should have been stopped under any circumstances. The correct fielding position is to get your body behind the ball, go on one knee and then field. But he bent from the waist down and the ball . So the captain tearing his hair out in frustration from the roots, because in the last 2 to 3 overs they have let everything slip through their fingers and given boundaries where there should have been no run or only a single. This time he manages to field and stop the boundary. So the score 92, the 13th over in progress, and that is a full toss. And that should have been taken. I think that is the turning point, because this was a catch which went straight to the hand of the close-in leg side fielder, bowling at a short fine leg, fielding at a short fine leg. And it went straight to hand and popped out of his hands. And instead he conceded a couple of runs. That should have been a wicket. So slipshod fielding from the bowling side. That catch dropped, I think, is the match. So I think I have to say to the DPS side, there goes the semi-final, boys. And now letting loose the fireworks. That's a 6. A 6 over mid-off. Between mid-off and extra cover, just crosses the boundary line for a 6. So let me tell you, DPS boys, there goes the first semi-final with that dropped catch. $100 up for the AMT batting side for the loss of 3 wickets. And now only 29 more to win. So after 13 overs, the score is 100 for 3. Only 29 more runs to get in 7 overs. So average hovering around 4, easily gettable, and that catch went a begging. It should have been taken. It was in the air for a long time, and the fielder had plenty of time to gather himself and take the catch.
So the captain himself comes in from the other end, Mudassar Rathore. So this batsman Ali Raza, batting on 44, has managed to salvage the position and put his batting side in a winning position. He is heading towards his 50, and I think it would be a very well deserved 50 and a winning performance from this batsman. Goes to 45 now. मुदस्सिर की 2 विकेटें एक मुझे ना वो जब आएंगे ना फुरकान गाड़ी तो उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा मैंने उनसे उनको कहना है कि वो जो सामान And that has been hit hard and high, but going straight. Oh! 6. अगर ये कर सकते हैं तो मुझे बता दें नहीं तो फिर मैं खुद ही आ जाऊंगा उधर इसको सामान लेने ये तो दूसरा नहीं आया था इंसिडेंट नहीं So that is the 50 up for this batsman. A match winning knock of 51 with that 6. 2 ओवर में 24 चाहिए वहाँ पे देख को 24 इसको सर्विस वालों को इसका नाम क्या है 50 की अली रजा मैंने तो बोला Ali Raza with a half century to his name at a very vital time when wickets were falling all around him. He stuck in there and has put his team in a winning position. Now, unless a miracle occurs, the AMT is sure to go through to the final, which shall be played next week at this ground. उन्नीस रह गए 19 पेन देना एक की तरफ So after 14 overs, there are Nelsons on the board. 1-1-1, 111 for the loss of 3 wickets. Nelson's on the board, 111 for the loss of 3 wickets after 14 overs. रन 18 runs required, and that ball hit away towards the onside. Bowler coming in, South the bowler, and that has been swept away towards the onside. Ali Raza now facing. He has scored a half century and brought his team into the winning position by staying at the wicket when wickets were tumbling all around him.
stretches forward, classic forward defensive stroke, no run. Good ball. There should have been more of such balls. So some wayward bowling and some very ordinary fielding. Let the DPS bowling side down, and earlier some ordinary batting as well. Short pitched, rank long hop that, and easily dispatched towards the onside. Goes between the mid wicket and mid-down boundary, crosses the boundary rope for 4. So that was a rank long hop, and that ball got the punishment it deserved. 4 runs more. And jumps down the wicket. And that is the shot of the day, a bowler's back drive. He went dancing down the wicket, hit the ball over the bowler's head for a boundary. And that is one of the best and most attractive shots in cricket, the bowler's back drive. Reminds one of that great batsman for Pakistan, that attractive stroke player who's like we have never seen, Asif Iqbal, when he started hitting bowling back drives against the England team when we were losing the match, and he managed to save the day and won a world record for the 9th wicket. Scored 137 runs in Leeds in England. This was in the late 70s against a very strong English attack. Because the field was so packed and the bowling so tight that Asif started jumping out of his crease and hitting bowlers' back drives over the bowler's head. A very difficult shot to execute, the bowler's back drive, and we have just seen that. That has to be the shot of the day from the batsman Ali, and now that has been hit hard and high. South catch. And finally they managed to grab a catch. 4th wicket goes down, but I am afraid that this is a bit too late. Only a few more runs to get. 6 wickets in hand. So this should have come earlier. 22 South. Saad Najam goes back after scoring 25. And he had a good partnership with Ali Raza. This pair managed to bring their side AMT into a winning position. Saklan is the new batsman, only a few more runs to get. He should, I think, just take a single and give the facing up to, leave the facing up to Ali Raza, who is strongly entrenched and seeing the ball very well. So folks, only 8 more runs are needed in 29 balls to win this first semi-final, AMT batting side. And unless a miracle occurs, I think that the AMT has to be given the advantage here. Full toss. A single. 7 more required. 8 required. Good ball. Covers up. Plays it towards the point. Fielder collects. No run. Comes in again the bowler from the Gaddafi Stadium and beaten outside the off stump. So this sort of length bowling should have been bowled earlier. Now when it's too late, they have struck a line and length, the bowlers. A single towards mid-off. And now 7 more runs required to win this first semi-final.
Vying for top honors, the two teams fought it out today at the Arfa Karim Tower, picturesque, beautiful green, lush green cricket ground. AMT and DPS in the first semi-final. And AMT now only 3 more runs, I believe, to get with that boundary, that delicate late cut outside the off stump. Another boundary. So Ali Raza has been the mainstay for the AMT side, and when wickets were tumbling around him, he managed to salvage the position and remain at the wicket, and had a partnership which brought the batting side of AMT, his side, to a winning position. Only 3 more runs to get now, plenty of balls, 6 wickets in hand. Turns it away towards the onside for a single. So another wicket goes down. The 5th wicket, but a bit too late, this penetrative bowling. Five wickets down, but still 5 wickets in hand and only a couple of runs or so to get. So AMT in a very strong position. DPS has tried through their captain Mudassir Rathore. He made the first inroads, bowled well, captained well, but his batting side let him down, and then the fielders let him down. Not grabbing their chances, not taking their catches, and letting the ball slip through their feet and their hands for boundaries. Two runs required. So the next batsman making his way to the crease. A bit late in crossing over, because according to the rules of cricket, the batsman who is out, when he crosses the boundary rope, he should be passed by the incoming batter. But anyway, sportsmanship being displayed by the captain Mudassir Rathore, he does not object. That's in play. That's sportsman spirit for you. Recently in the World Cup, we saw टाइम आउट दिया था बांग्लादेश या श्रीलंका? बांग्लादेश ने अपील की थी, श्रीलंका का नेशनल आउट हुआ। recently we all saw in the World Cup that the Bangladesh captain appealed successfully for a timed out decision against the Sri Lankan batsman, because he was late in crossing over and then facing up the first delivery. Scores level, and now with that single, AMT folks, ladies and gentlemen, win the first semi-final in the Premier Super League 7th edition at the Arfa Karim Tower Cricket Ground in this important
hotly contested tournament, contested and participated in by the top corporate teams and government sector organizations and departments of Pakistan. And all through the league matches, this tournament has been going on for over a month, and then the quarterfinals. The top teams have reached the semi-final. The first semi-final, the AMT side won the toss, and their captain made a wise decision, seeing the overcast conditions, and he exploited the conditions. He put the opposing side, DPS side, into bat and instructed his bowlers to bowl to a line and length, and they made maximum use of air and bundled out the strong DPS batting lineup for 128. And they overhauled this total. They overhauled this total for the loss of 5 wickets in the 16th over, with plenty of balls to spare. So congratulations to the AMT side for winning this first semi-final and making it through to the final, the top honours. I am Professor Salman Rafiq, commenting live on you in this match, and we'll be with you with the second semi-final very shortly. Thank you. Take care. Allah Hafiz. ਡੋਮੇਨ ਸਾਡੀ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਕਾਮਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਜ਼ਾ ਕੈਮਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਲਿਆਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੀ ਲਿਆਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਐਕਨੋਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਾ ਦਿਓ